Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and enjoying your holidays. So, as you know that today it is the first day of your online class. I want to tell you that now I will start something new. I know very well that you all want to learn speaking. So, I want to inform you that there are two most important things which are most important for learning speaking. The first thing is vocabs and the second thing sentence formation. If you know these two things, it means you are able to speak English. You should try to fulfill your achievement. You can do practice by standing in front of mirror. If you are not having anyone who can speak you English in your home. Okay guys? So now from today you will speak only English. Let's start vocabs. Implement. IMPLEMENT. Implement means apply. किसी भी चीज़ को लागू करना. Like you can give example. This rule will be implemented by evening. Nightmare. बुरे स्वप्न या बुरा सपना. Unpleasant dreams. He still has nightmares about the accident. आज भी उसे एक्सीडेंट के बुरे सपने आते हैं. और यू कैन से आई स्केयर्ड बाई नाइटमेयर टुडे. आज मैं बुरे सपने से डर गया. प्रॉम्प्ट. टू इनकरेज समबडी टू स्पीक और डू. किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना. शी प्रॉम्प्ट्स मी टू डू माई बेस्ट. वह मुझे हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं. यू कैन सेंड योर रिप्लाईज एंड प्रॉम्प्ट मी. आप सब मुझे रिप्लाई कर सकते हैं और मुझे इनकरेज कर सकते हैं टू टीच यू इंग्लिश. दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रॉम्प्ट. प्रोटेस्ट. विरोध करना. टू अपोज. टू शो डिसअप्रूवल. अस्वीकृति देना. फ्यू पीपल्स प्रोटेस्टेड GST. कुछ लोगों ने GST का विरोध किया. कैरीड आउट. टू कंप्लीट और फुलफिल. कोई कार्य पूरा करना. I carried out the plan. Obviate. To remove the problem. किसी समस्या को कम कर देना. This new evidence obviates the need for any further inquiries. Or you can give example. Lockdown will obviate the spreading of coronavirus. जो लॉकडाउन है वो कोरोना वायरस के फैलने की पॉसिबिलिटी को कम कर देगा. You can make it. द नीड ऑफ द आवर. नेसेसिटी ऑफ द टाइम. समय की आवश्यकता. लॉकडाउन इज़ द नीड ऑफ द आवर. लॉकडाउन आजकल की समय की मांग है. नैरोड डाउन. टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़. कम कर देना. लॉकडाउन नैरोड डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दीज आर द vocabs. You should learn it and you have to make sentences by using this. Now it's turn of sentence formation. I am going to tell you about the sentence formation. As my topic is let, today I will tell you the use of let. Let means करने देना. It is used as a verb. I want to tell you that let. It means the verb first form is let, verb second form of let is let and third form is also let. let की verb की first form, second form, third form तीनों ही let होती है. I am going to tell you the rule of present indefinite tense, that how you will use let in present indefinite tense. Subject verb first form plus S or ES plus object. राम मुझे सोने देता है. राम लेट्स मी स्लीप. You know very well that S or ES is used with singular subject. Ram is a singular subject, so we are using here S. Ram lets me sleep. मैं तुम्हें जाने देता हूँ.
I let you go. वह मुझे बोलने देता है. He let me speak. वह मुझे जाने नहीं देती है. She does not let me go. Past indefinite tense. You know the structure. Subject, verb second form, object. पापा ने मुझे खेलने दिया. पापा ने मुझे खेलने दिया. Father let me play. तुमने मुझे जाने दिया. You let me go. Future indefinite tense. Subject plus will plus verb first form plus object. वह मुझे बोलने देगी. She will let me speak. Guys, I think that you all got the rules of let. Now it's your homework that you should learn word meanings, means vocabs, and make at least 2 sentences by using each meaning. Okay? And you have to make 20 sentences by using let. And you can send your homework by Campus Care. Okay? Thank you guys.